कृष्ण। सृगतौ धातु अत्र। Sru means to flow, like Sravati, like Nadi Sravati. The river flows. So Sru Gato. Ni Shri Drusru Kamibhyo Ang Bhuteshe Kartari. Ang is applied after the Nyanta dhatus and after Shring dhatu, Dru, Sru, and Kamu when a Bhutesha Pratyay follows in Kartari Prayoga. So we apply Ang after these dhatus and Sru is also there. Recording in progress. So Sru plus Dip dhatu Puramat. And by this sutra, instead of inserting C, we are inserting Ang. Nishri Drusru Kamibhyong Bhutesha Kartari. And because Ang has Nga, so it becomes Kichang Ichakansari. Thus we apply Dhatu Shatu Sanasevo Sarveshware. And then we apply Dhator Druchana Madhokshaja Sanang Yangshu, reduplication. Because it says when Ang is there, even then we do the reduplication. Dhator dvir vachanam adhokshaja san ang yangshu. Ang is also there. तो अंग रहने से भी द्वित्व हो जाएगा. So स्थानिवत द्विवचनम we get sru. And then nara vishnu jananam adi shishyate we get su. And we get asusruvat. Asusruvat. Okay. Asusruvat. Reduplication is done by dhatur dvivachanam adhokshaja san ang yangshu. Then the next dhatu is gamri gatau. Also, if one student of mine is writing all the dhatu forms, which we are studying in Harinama Vrityakran. He's making those Excel sheets, kind of. Have I shared that with you before? Yes, Prabhu. Okay. Then it's good. Then you can cross-check. He's actually studying Akhyata from Briyat. So then those dhatus are also there. In fact, we are actually studying Niyanta, and just after this class, I'll be doing the class with him. We just started Nyanta yesterday. Nyantas start after the 10 ganas. So we just started Nyanta yesterday. And this sutra is applied there also in Bhutesha. Because it says Ang is applied after the Nyanta dhatus. So this is an important sutra there. Prabhuji, this is etad nich dhatu. Amam, nichant or Nyanta nich. Causative. प्रेरक. in एतस्मिन् नाम भिन्नम् अस्ति. कुत्र? हरिनामामृत. आमामाम हरिनामामृते णी इति. नी इति. पाणिनि मध्ये णिच्. अस्तु. So gamri gatau dhatuhu. So ishu gami yamam cha shive रूपम भवति गच्छति. गम युक्त तिप शब कृष्ण धातु के ईशु गमी यमाम छ शिवे मत्स्य छह ma becomes cha, and then we apply that sutra. How do we reduplicate cha? That Trivikramatva in Sarveshwara Sandhi? No, Vishnu Jana Sandhi. Vishnu Jana Trivikramatva, and before that. किम सूत्रम प्रभु? द्विसर्वेश्वर मात्राच्च. द्विसर्वेश्वर मात्राच्च. सो तत्सूत्रात् गच्छति इति यादव मात्र हरिकमलम गच्छति. द्विसर्वेश्वर मात्राच्च. गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छसि इत्यादि.
तो गमलरी धातोः गच्छति इति भवति गमलरी. That's why gaman agaman, we say gaman agaman lut. And yeah, madgatenantaratmana, right? Krishna says madgatenantaratmana. That gata comes from gam dhatu again, ta pratyay. प्रत्यय. Actually, kridanta is very important. I think now Manas Prabhu is realizing after studying. All these words are found by applying those 18 main kridanta. Maybe sometime you can meet online Manas Prabhu and Prabhu. So मानस प्रभु आपका भी रिवीजन हो जाएगा हाँ प्रभु जी, यस तो. और प्रभु जी का भी कवर हो जाएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उनको स्टडी में बहुत हेल्प होगा. और उससे रिलेटेड कोई भी चर्चा हो तो क्लास में तो कर ही सकते हैं. ठीक है, तो गम प्लस ते, गम या कृष्ण धातु के भाव कर्मणों गम्यते, गम्यते. ठीक है. देन पुषादि द्युतादि हृदितो ङो भूतेशे परपदे. ङ is applied after the pushadis, dyutadis, and dhatus which have the indicatory letter re when a bhutesha parapada pratyaya follows. So again, earlier it was ang. It was ang earlier, right? This one was ang. Nishri drusu kamibhyo ang. And now it is nga. Pushadi dyutadi ridito mo bhutesha parapade. They are different. Ang and nga, they are different. So nga is applied after pushadis, dyutadis, and dhatus that which have the indicatory letter re when a bhutesha parapada pratyaya follows. So pushadis refer to a subgroup of divadi dhatus. Divadi is the fourth gana, by the way. We'll see that there. So gam plus dip dhatu puramat, we apply this sutra. Pushadi dyutadi ridito ngom bhutesha parpade, because gam has re as indicatory letter, and we get agamat. No Vrishnendra done here because Ishasya na Govinda Vrishnendra Kansarishu. Kitchang Itcha Kansari. Agamat. Then gam plus the dhatu puramat in bhuteshate bhav karmano uddhavaramasya Vrishnendro nrisinghe inasto haraha agami. Agami. Then, so these are the pushadis mentioned from the Divadi section. And these are the Dyutadis. So they also take nga when Putesha Parapada Pratyaya is following. Then these are the dhatus with the indicatory letter re. Do we have to by heart this sequential? I don't think so. It's just that they have given it here so that we can refer to them whenever required. See, ideally in Sanskrit, ideal thing is to memorize everything. But this is a concessional study program we are doing. हाँ चलेगा चलेगा, अब पढ़ लो बस. Just continue. ये न कहने प्रकार है ना. But even So- if you want to by heart, so this is the only sequence, or we can just jump No, along? see, sequence doesn't really matter. The main point is we remember the groups. Okay, dhatus with the indicatory letter re, and like that. Yeah, Ditadis. I've not seen anyone, having memorized all these sets of dhatus. When the form comes, then we just need to identify. It's only when we are to, when we write something in Sanskrit, then we need a very careful discrimination while picking dhatus. प्रभु जी, रूप गोस्वामिनः पर्युक्तमञ्जरी इत्युक्त ग्रन्थनामानि
धातु सरलबोधनम हम्म। कृतम कृतम वा वो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है। मया तत् न अन्वेषितम्, अनुसन्धानं न कृतं मया तस्य ग्रन्थस्य, अतः किमपि वक्तुं न शक्नोमि इदानीं तत् ग्रन्थस्य उपरि। किन्तु श- मया श्रुतं, ग्रन्थस्य नाम मया श्रुतम्, एतावदेव। प्रयुक्तमञ्जरी, ऐ थिङ्क् प्रयुक्त आख्यातमञ्जरी। यस आम आम प्रयुक्त आख्यातमञ्जरी। ठीक है, अस्तु। हरिवेण्वन्त सहजानिटां तन्नु क्षणौ क्षिणु त्रिणु मनु मनुनामपि हरिवेणु हरो वैष्णवादि कंसारौ। When a Kansari pratyaya that begins with the Vaishnava follows, mm, the Harivenu of the Sahajanit dhatus, which end in a Harivenu, is deleted, and the Harivenu of the following dhatus is also deleted. So, Prabhu, Manas Prabhu, this is the sutra by which we were deleting all the Harivenus. Gata, Gam becomes Gata. ओह This is the ओह sutra. From Gam, Gata, Gati, Gataman, Han, Hata, Hati, Han, Hatavan, like that. So by this sutra, we are deleting the Harivenus. So again, when a Kansari Pratyaya that begins with a Vaishnava follows, the Harivenu of the Sahajanit Dhatus, which end in a Harivenu, is deleted. And the Harivenu of the following Dhatus also deleted. Maya Tatam Idam Sarvam, I mentioned, right? That day. आम So that comes from Tanu Vistare. So na is deleted by this sutra. Maya Tatamidam Sarvam Jagad Avyakta Murtina. So like that. So Gam plus Atam and Dhato Purvamat Sir Bhuteshe. Then C becomes Kapila. Re Ram Hanibhyam, it says no. C becomes Kapila by which sutra? Ridvaya Vishnu Janant Eshodhavacha Vaishnavadi C Kamapalo Kapilavatmapade Gamestuva. Yeah, that sutra. ऋद्वयाद विष्णु जनांत ईश उद्धवाच्य वैष्णवादि सी कामपालो कपिलावात्म पदे गमेस्तुवा. Yeah, there. So after gam dhatu, when C is there, then C is considered kapila. 355. 355. Got it? 355. So gamestuva it says. So that's why kapila optionally. And then when C is kapila, then we apply this current sutra. Harivenvanta sahajanitam. Harivenvanta sahajanitam. तनु क्षणु क्षणु त्रिणु मनुनामपि हरिवेणु हरः वैष्णवादि कंसारो. So we get agasatam. So this sutra is not just restricted or limited to akhyat. It's also used in other prakaranas like kridanta and all. Okay. So agasatam, then gam plus atam, dhatupuramat sir bhuteshe. Now C is not considered kapila here because it said gamesh tuva optionally. So we do अविष्णुपदान्तस्य नस्य मस्य च विष्णुचक्रम वैष्णवे, and we get agang satam. Agang satam. Okay. Agasatam, agang satam. Similarly, for others also will get same kind of forms. Agami, so you can do that. Then gam plus null, adhokshaja, uh, Vrishnindra, reduplication, kavarga, chavarga. So we get jagam. Jagam.
देन गम हन जन खन घसाम उद्धवा दर्शनम कंसारी सर्वेश्वरे ngam विना. गम हन जन खन घसाम uddhava darshanam kansari sarveshwara ngam vina. The uddhava of these dhatus gam han jan khan and ghas disappears when any kansari sarveshwara follows except for ng. So gam plus atus. Now atus is considered kansari. Asanyoga dalida dhokshaya kapila. Kapilatvat kansari. And it begins with sarveshwara. So we delete the uddhava by this sutra. And then reduplication sthanivat kavarga narasya chavarga jagmatuhu. Jagmatuhu. Then jagmuhu. Jagmuhu. In thal, optionally we will insert it. Sahaja Ramavatashya Tadrishat, I think it came. So optionally it is inserted. So Jagamitha Jagantha. Okay, one second. And Jagantha. Yeah, optionally it is inserted. Yeah, so that's how we get Adhokshaya. Then Gamerit Saram Adi Ram Dhatu ke Natapade. See, Gam Dhatu is anit. So normally we are doing anit. And wherever it is there optionally or whatever, we are inserting it. Yes, Prabhu. Prabhuji, in the shlok, in एतस्मिन् श्लोके Am. एतस्मिन् सूत्रे Mhm. 2.1 जगमिथ जगन्थ वा रूप Mhm. रूप मध्ये अस्माभिः अस्माभिः 386 सूत्रं प्रयुज्यतं प्रयुक्तम. प्रयुक्तं Mhm. तर्हि तर्हि भवान् पूर्वे सत्रं उक्तवान् that we will discuss this sutra 386. अहमपि इदानीं दृष्टवान् 386 सहजा रामावतश्च तादृश इति उक्तं. तर्हि अहं न जानामि एतत् सूत्रं किमर्थं वा. हरि हरि विफलया. Sorry. क्षम्यताम्. सहजा रामवतश्च तादृशात् इति. भवता सहजा रामवत तादृशात् तत्सूत्र कृते पृष्टवान्. हरि ओम. हरि ओम प्रभु जी. हम्म. एक निमेष. सूत्र पाठम उद्घाटयामि. तो सहजा रामवतश्च तादृशात् तत् सूत्रात् पूर्वम् एकं सूत्रम् अस्ति
सर्वेश्वरान्तात् सहजानिड् इड्वा थली। अस्तु। सर्वेश्वरान्तात् सहजानिड् इड्वा थली। अ, यदि सहजानिड् धातुः अस्ति अ, यस्य अन्ते सर्वेश्वरः वर्तते, तत्र थल् परे सति इट् आगमिष्यति विकल्पेन। तो तद् इड्वा थली इति अग्रिम सूत्रे किम् आवृत्तिः पुनरावृत्ति आवृत्ति कैरिंग फॉरवर्ड इति। carrying forward। तो सहजा रामवतश्च इड्वथली इति सूत्रम्। अब सहज अहम अक्रांत किंचित अक्रांत भवामि। एतत् कथम् सहज निट् धातु इति नेचुरली निट् धातु। आम् तर्हि मतलब जो एक तरह से हम समझे कि अनिट धातु और अनैचुरली अनिट धातु में क्या अंतर है? यदा कदा आम्, कैश्चित् अपि सूत्रैः आ, ये केऽपि सेट् धातवः अनिट् इति अनिटाः इति मन्यन्ते। मतलब सेट कभी कभार माना जाता है अनिट को। अनिट् अनिट् अथवा वेट्। अ, फॉर एग्जाम्पल स्वर्ति सूति सूयति धूयु उदित इड्वा आम कृतम् अस्माभिः। आम आम। तो इड्वा यर्हि इट्वा इति एकपक्षे सेट् इतरपक्षे अनिट्। हम्म। तत्र अनिट् इति असहज न तु सहज। तत्तु सूत्रबलात् भवति ना। तत्र मतलब अनिट् इति वहां पर जो अनिट हो रहा है वो तो सूत्र के बल पे अनिट हो रहा है। मान लीजिए कोई धातु है जो सेट धातु है, हम्म जैसे स्वरति सूति सुयति धूयु ये सब। हम्म अब मान लीजिए ये सब धातु सेट हैं, किंतु इस सूत्र के बल पे विकल्प से ये सेट हो गए और विकल्प से ये नेट हो गए, वेट हो गए ना। वेट मतलब ऑप्शनली सेट ऑप्शन। ऑप्शनली नेट। हम्म। तो जब ऑप्शनली नेट हुए हैं तो उस नेट पक्ष में वो सहज थोड़ी है, वो उनको तो इम्पोज किया हुआ है अनिट। ओके तो वो ओके। सहज नहीं रहा, वो सहज नहीं रहा। सहज ठीक है। मतलब वो जन्म से ही जो सहज है ना, जन्म से ही कोई हम्म। एक नेचर है, वो जन्म से नहीं है, उसको थोपा गया है। एक होता है और कोई पैदा पैदा होता ही कोई अंधा है, हम्म। और मान लो एक होता है कि नहीं पैदा होते अंधा नहीं है किंतु बाद में कुछ एक्सीडेंट हुआ तो अंधा हो गया। तो जो पैदा होते ही अंधा था वो सहजांध, वो सहज अंध है। समझ गए ना इस तरह से। यथा यथापि कश्चन धातवः आम अनिट अस्ति, मतलब कुछ जो धातु है अनिट ही हैं, पर उन पे कई बारी कुछ सूत्र के कारण अगर इडवा लग जाता है तो वो कई बारी वो भी वेट की कैटेगरी में आ जाते हैं उस। हाँ तत्र ते धातवः आम, असहज असहज। असहज रूपेण सेट भवति विकल्पेन, ओके। न तो तो वो सहज सेट। असहज असहज। ठीक है। असहज मतलब सहज का विपरीत हो गया असहज। असहज। या, अस्तु भवति। गमेरिट सराम आदि राम धातु के नात्म पदे। इट इज इंसर्टेड आफ्टर गमलरी when a ram dhatuka beginning with sa ram follows, but not if the ram dhatuka is an atma pada pratyay. So it is inserted after gumri when ram dhatuka is there, which begins with sa, but not in atma pada. So gum plus syati. Now syati begins with sa. It's ram dhatuka.
So we insert it, we get Gamishyati. But in Syate, although Syate is Ram Dhatuka beginning with Sa, but it's Atmapada. So we will not do because it's prohibited. So Gang Syate. अविष्णु पदांतस्य नस्य मस्य च विष्णु चक्रम वैष्णवे। वैष्णव। तो इस प्रकार गम्री इति धातुः अपि पूर्णम् अस्माभिः ये हरि। अस्तु। श्रीमद्भागवतात् दशमस्कन्धात् प्रथम न तो प्रथम द्वितीय द्वितीय द्वितीय। प्रभु जी एक क्षण। दत्तम। तो कुछ श्लोक हमने पढ़े थे यहाँ पे वृंदावन में, तो इसलिए वो आपको लगा होगा कि अरे तो हम दूसरे अध्याय के मन्ने हम एकोनविंशतिः श्लोकसङ्ख्यकं पठितुम् अर्हामः। एकोनविंशति। मेरा आम मेरा बुकमार्क गलत जगह लग गया। मैं जस्ट एक मिनट देख रहा हूँ प्रभु जी। द्वितीय प्रभु जी विंशति विंशति। एकोनविंशति कृतम्। आम आम आम। अस्तु। तां वीक्ष्य कंसः प्रभया जितान्तराम् विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम् आहैष मे प्राणहरो हरिर्गुहाम् ध्रुवं श्रितो यन्न पुरेयमीदृशी। तां वीक्ष्य, तो कंसः हम्म तो कंसः आह, कंस स्पोक। This is the very basic statement here. Kansa aha. Kansa spoke. Now we have to club things here, to make the whole thing. So Kansa tam viksha aha. Kansa spoke after seeing her, you know. So when we're trying to do Anvaya, we should try to, build gradually. Kansa aha, okay. Then Kansa tam viksha aha. Now tam kidrishim, tam devakim kidrishim, So we have adjectives here. Ajitantaram, one. Ajitah antare asti yasyah tam. Ajit is inside whom? The Lord Ajit, Krishna is inside whom? She. Ajitantaram. 2.1. Tam. Then Shuchi Smitam. I think Shuchi Smitam. Smita is smile. Shuchi, gently smiling, very gentle smile. Shuchi Smitam. Yeah, smiling and brilliant. 2. That's second adjective. Tarhi prabhaya bhavanam virochayantim. Then prabhaya. Prabha is the kanti. Kantya sampurna bhavanam. Karagriham bhavanam virochayantim. Alokayantim. She was वो पूरे भवन को विरोचयंती, मतलब क्या कहें,
प्रज्वलित उज्ज्वलित कर रही थी, जैसे चंद्रमा के उदय होने से अंधेरा मिट जाता है और विरोचे अंतिम, है ना, वो हो जाता है। तो उसी तरह से इल्यूमिनेटिंग। सो दैट्स थ्री। सो तीन विशेषण हुए ताम देवकिम के: अजितांतराम, शुचिस्मिताम, विरोचयन्तीम। तो एतादृशीं ताम देवकीं वीक्ष्य कंस आह। सो सीइंग सच देवकी, कंस स्पोक। नाउ व्हाट डिड ही से? एषः मे प्राणहरः हरिः। This is indeed Lord Hari. I mean, he didn't. He must not have said Lord. This is indeed Hari, who will take away my pran. Will take away my pran. Will kill me. And Dhruvam Guham Shritah. प्रभु जी। And certainly he has taken shelter of Guha. Guha means like a cave. Here Guha means the womb of Devaki. And indeed he must have taken shelter, refuge inside Devaki. Yet na pura iyam idrishi, because I have not seen such radiance, such illumination, such manifestation before in this place, in this bhavana, or this Devaki was not illuminating like this earlier at any point of time. Pura iyam idrishi na. Pura earlier, iyam Devaki, she, idrishina. She was not like this before, like what she is now, radiating, full of luster. Just imagine, like practically, Kansa is seeing a person in front of him who is emitting light. you know, like nowadays we use VFX and whatnot technology to show that thing, radiance, that light. But Mother Devaki was practically, physically, manifesting that light, that abha, effulgence from her body. Vasudev was also emitting similar, right? And it was mentioned that Kansa could not see him, just like one cannot see the sun in the daytime with naked eyes. Okay, yes, Prabhu. Prichadu. प्रभु जी, यतः वयं स्पेशली अहं कली Hmm. कली कली Kaligata Jiva. कलिगतजीव अस्मि। तर्हि पूर्वे गुरुकुले पद्धति केवल श्रुतं कठिनमस्ति। तर्हि अहं एकं प्रपोजं Dadami. ददामि तत् कि प्रभु जी, if it's possible, तो आई वॉज एक्चुअली वंडरिंग बिकॉज आप बात तो कर रहे हैं, टू ऑल्सो प्रोसेस फॉर मी ऑल्सो आई हैव टू सी फ्रॉम कि अच्छा इसका ये वर्ड मीनिंग। सो एंड फॉर अनवे ऑल्सो, तो जैसे आप अपने वो टैबलेट का पेंसिल से करते हैं, तो इट वुड बी वेरी लाइक इजी फॉर अस टू प्रोसेस। अगर आप इस पे ऐसे मार्क करके, दिस इज एडजेक्टिव, दिस इज द सब्जेक्ट वी आर सीइंग राइट नाउ, आहा, इंडेक्लाइनेबल समथिंग, डूइंग वो समथिंग मार्किंग। तो उसमें फिर आप बहुत ये आप सुन के कर सकते हैं ना। वो मुझे समस्या नहीं है, पर वो बहुत फिर एक एक श्लोक में ही हो जाएगा। नहीं, साथ के साथ ही बस जल्दी 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 जैसे आपको उसमें ठीक लगे, थोड़ा मेरे बहुत। पास तो मेरे पास तो सेटअप है, ये देखिए मैंने तो सेटअप रखा हुआ है यहाँ पे, वो सब है सिस्टम। पर मुझे कोई समस्या नहीं है, वो फिर वो आप वैसा करवाएंगे तो मुझे तो कोई समस्या नहीं है। अगर आपको वैसा चाहिए तो आई डोंट माइंड।
ठीक है, मैं इसको for easy, sir, for easy process for the mind. अ, एक एक निमिष। हम्म। तो अत्र कंसः इति कर्ता, तो कर्ता, तो कर्तुः क्रिया अस्ति आह। वीक्ष्य अपि, वीक्ष्य असमापिका क्रिया, ल्यप, Yep. वीक्ष्यति ल्यपंत। तो कंसः वीक्ष्य आह, कंस स्पोक आफ्टर सीइंग टू एक्टिविटीज। तो वीक्षयति असमापिका, असमापिका, असमापिका क्रिया, आह इति समापिका वक्तुं शक्नुमः। असमापिका इति कि इसके बाद कुछ होगा, Okay. कि राम वन में जाकर, है ना, जाकर उसके बाद कुछ आएगा, तो Hmm. वाक्य पूरा नहीं हुआ। समापिका मतलब कि इसके बाद कुछ ना आएगा तो भी चलेगा। जैसे राम गया, तो गया समापिका हो गया, समाप्त। इसके बाद कुछ है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो असमापिका समापिका, तो दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो कंसः वीक्ष्य आह, कंस ने देखकर कहा। तो क्या देखा? तो देवकी जी को देखा, तो देवकी बिकम्स ऑब्जेक्ट, कर्म। Hmm. देवकी, ताम देवकीम इति कर्म वाच्य। तो तस्याः देवक्याः विशेषणाः सन्ति अजितान्तराम विशेषण 1, शुचिस्मिताम विशेषण 2, प्रभया भवनम विरोचयन्तीम इति विशेषण 3। तो ईदृशी देवकीं वीक्ष्य कंसः आह, किम आह? यत् एषः गुहाम्, एषः गुहां श्रितः ध्रुवं मे प्राणहरो हरिः। दैट दिस एषः, दिस दिस गुहाम श्रिता, one who has taken shelter in Devaki, of Devaki, or in Devaki's womb, he is certainly Lord Hari, or he is certainly Hari, who will be my killer. Me pranhara. Asti, you can take asti here. Asti न दत्तम किंतु स्वीकर्तुं शक्नुमः। यत् न, यत् अत्र, यत् इति यतः, बिकॉज। यत् अत्र यतः इति अर्थे प्रयुक्तम, यतः इति कारणात्, हेतु अर्थे, बिकॉज। बिकॉज इससे पहले तो मैंने इसको ऐसे नहीं देखा सरल शब्दों में, इसके पहले तो इस प्रकार से नहीं देखा। पूरा इयम ईदृशिना, पूरा इयम, इयम इति देवकी, Hmm. अदसोयम सौ, इयम तो लक्ष्म्याम। Yem to Lakshman. तो इयम देवकी ईदृशिना आसीत, पूरा तो इयम देवकी ईदृशिना आसीत। ईदृशी की दृशी, विरोचयंती। ईदृशी की दृशी अजितांतरा। ईदृशी की दृशी शुचिस्मिता, है Hmm. ना, जो विशेषण दिए गए हैं। ईदृशी की दृशी, तो ये जो विशेषण ऊपर दिए गए हैं वही सब, इस प्रकार से नहीं देखा मैंने। प्रभु तो जी, हम्म, आप एतस्मिन् श्लोके पुरा पुरा प्रायः आङ्ग्लभाषे सिटी अस्ति न? नो नो, पुरा इति, दैट तत्पुर, तत्पुर, लाइक पंढरपुर, पुर।
अत्र तो पुरा, पुरा इति बिफोर, पुरा काले, प्राक् काले, पुरा काले, अव्यय अस्ति। पहले, आम आम अव्यय, पूरा। एंड प्रभु जी, ध्रुवम का सर्टेनली ही मीनिंग आता है या कुछ परमानेंटली टेम्परेरी भी होता था? ध्रुवम, इंडीड, सर्टेनली, निश्चय, निश्चित, निश्चय ही, निश्चय ही, उस निश्चय। भाव में ध्रुवम। अव्यय, अव्यय अपि। निश्चित अग्रह। देखना होगा, ध्रुवम चेक करना पड़ेगा, ध्रुवम। चेक करना पड़ेगा, ध्रुवम। मेरे हिसाब से अव्यय नहीं है, किंतु भवितुम अपि शक्यते, ध्रुवम, प्राणिनाम ध्रुवम, ध्रुवेण ध्रुवम। अस्तु। आम प्रभु जी। तो किमद्य तस्मिन् करणीयमाशु मे, यदर्थ तंत्रो न विहन्ति विक्रमम्, स्त्रियाः स्वसुर गुरुमत्या वधोयम्, यशः श्रियम् हन्ति अनुकालमायुः। हन्ति अनुकालमायुः। तो मैं, तो अद्य मैं, अ, अद्य मैं तस्मिन् किम् आशु करणीयम्। तो अद्य में तस्मिन् किम् आशु करणीयम्, अर्थात अब, इदानीम, अद्य, अब, मेरे द्वारा या मैं इस विषय में, तस्मिन् विषये, किम करणीयम, क्या करूं, और आशु मतलब जल्दी, अब मुझे इस विषय में जल्द से जल्द क्या करना चाहिए, क्योंकि इतने वर्षों से अष्टम गर्भ की प्रतीक्षा थी और वो अब आ चुकी है। और अब कंस सोच रहे हैं कि अभी समय आ गया, तो अब मुझे जल्दी से जल्दी क्या करना चाहिए, वो सोच रहे हैं, सह चिंतयति। तो यद अर्थतंत्र, यद अर्थतंत्र विक्रमम न विहंति, अर्थतंत्र, अर्थतंत्र, वन हु इज बाउंड बाय द ऑब्जेक्ट्स विषय, तंत्र इज कंट्रोल्ड, लाइक स्वतंत्र परतंत्र, है ना, तंत्र, बाउंड। सो वन हु इज बाउंड बाय अर्थ, धर्म अर्थ, अर्थ विषय, धर्म वेल्थ, अर्थ one's own purpose. So one who is selfish, let's say, अर्थतंत्र, vikramam na vihanti, we'll read this, vikramam na vihanti. Then striyah swasuh गुरुमत्या वधः अयम, यशः श्रियः अनुकालम आयुः हन्ति। So killing of a woman, sister, wife of guru, if one kills, if one being selfish kills a lady, one sister, or the wife of one's master, then that killing will kill one's yasha, fame, one's shri, wealth, and one's
Age, Ayu, Hanti, Anukalam Ayu. It's similar to that shloka. Ayuhu, Yashah, Shriyo, Labdham. Ayu, Shriya, Yasho, Labdham. Ayusha Evacha. Hanti, Shreyansi, Sarvani. Very famous shloka. Ayuhu, Shriyah, Yasho, Labdham. Hanti. Yeah, this one. Ayu Shriya Yasho Labdham. Ayu Shriya Yasho Dharmam. Lokan Ashisha Evacha. Hanti Shreyansi Sarvani Pungso Mahadatikrama. Same kind of mood. My dear king, when a man persecutes great souls, all his benedictions of longevity, beauty, fame, religion, blessings, and promotion to higher planets will be destroyed. Same thing, which Kansa is thinking. And here Kansa is thinking what? What is my duty now? Kim Karaniyam me. The Supreme Lord, acha, Arthatantra. Okay. Who knows his purpose will not give up his prowess. Acha, Vikramam na vihanti. Devaki is a woman, she is my sister, and moreover, she is now pregnant. Okay, Guru Matya is pregnant. If I kill her, my reputation, opulence, and duration of life will certainly be vanquished. Okay, little change. So, Arthatantra is referring to Krishna here. See, Arthatantra is Krishna here. We'll have to look in Anvaya by Bhakti Siddhanta Prabhupada how he decodes Arthatantra there. Anyhow, so Krishna will never give up his Vikrama, his nature of protecting his devotees. So then if I kill my sister, who is a lady and who is pregnant, Guru Mati. Yeah, Guru Mati is pregnant. And 6.1 Guru Matya. So Guru Mati is pregnant. Then it will lead to my own destruction. My reputation, opulence, everything will be vanquished. Okay. The same line was also told by Vasudev to Kamsa. Right, but then he didn't understand. And now he's by himself thinking. I think because he's standing in front of Devki and Supreme Lord is personally there. Some influence. Sadhu Sangha. Something. Okay, we'll stop here. Another. I have to cause that Prabhu to study in Yantras. Positive. So we'll continue next class, Saturday, day after tomorrow. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji, Namo Namaha. Namo Namaha. Punarmilama. Punarmilama. Hare Krishna. Hare Krishna.